हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा माइक फिर से ऑफ था, अच्छा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में ही ऑन कर दिया। तो आज चैप्टर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेजिनेशन। ठीक है, लेट्स टॉक। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, द फिफ्थ स्टेप टुवर्ड्स riches. The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by men. The impulse, the desire is given. एक सेकंड गाइस। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, जरा ये तार वार का सीन हटा दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे तार का सीन हटाया, सीधा पेज नंबर 1 पे आ गया। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, द फिफ्थ स्टेप टुवर्ड्स riches. The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by men. तो इमेजिनेशन क्या है? जहाँ पे सारे प्लान्स बनाए जाते हैं। द इम्पल्स, द डिज़ायर इज गिवन शेप, डिज़ायर को शेप दिया जाता है। Form and action through the aid of the imaginative faculty of the mind. It has been said that man can create anything which he can imagine. All the ages of civilization, this is the most favorable for the development of the imaginations because it is an age of the rapid change. ठीक है, of all the ages of civilization, this is the most favorable for the development of the imagination because it is an age of the rapid change. On every hand, one may contact stimuli which develop the imaginations. Through the aid of his imaginative faculty, man has discovered the harnessed more of nature's forces during the past 50 years than during the entire history of the human race. Previous to that time, he has conquered the air so completely that the birds are a poor match for him in flying. He has harnessed the ether and made it serve as a means of instantaneous communication with any part of the world. He has analyzed the weight the sun distance of million miles and has determined through the aid of imagination the elements of which it consists. He has discovered that his own brain is both a broadcasting and a receiving station for a vibration of thought, and he is beginning now to learn how to make practical use of this discovery. तो देखो, उसको पता चल गया कि जो उसका ब्रेन है वो ही सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट भी करता है, रिसीव भी करता है, एक स्टेशन टाइप का है। ठीक है, अच्छी चीज़ों सोचोगे तो अच्छी चीज़ें रिटर्न होंगी, बुरी चीज़ सोचोगे तो बुरी चीज़ें रिटर्न होंगी। आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी। तो हमारे साथ कौन जुड़ा है पहले तो मुझे वो बता दीजिए। मेरा फ़ोन था यहाँ पे। ओके, मेरा फ़ोन यहाँ पे है 0% चार्ज। एक से रुक चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Though the aid of his imaginative faculty, man has discovered harnessed more of nature forces during the past 50 years than during the entire history of the human race. Previous to that time, he has conquered the air so completely that the birds are a poor match for him in flying. He has harnessed the ether and made it serve as a means of instantaneous communication with any part of the world. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। He has increased the speed of locomotion until he may now travel at a speed more than 300 miles an hour. The time will soon come when a man may break fast in New York and lunch in San Francisco. ठीक है, मतलब आप देख लो, एक समय ऐसा भी आने वाला है जब बंदा सुबह का ब्रेकफास्ट न्यूयॉर्क में कर रहा हो और दिन का लंच सैन फ्रांसिस्को में कर रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने वाली, और ये 70 साल पहले लिखा गया है। Man's only limitation within reason lies in his development and use of his imaginations. He has not yet reached the apex of the development in the use of his imaginative faculty. तो देखो, अभी बोला जा रहा है कि इंसान अपने टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, सोचने की क्षमता का यूज़ बहुत कम करते हैं। अगर आपने लूसी मूवी देखी होगी तो देखा है ना कि अगर ह्यूमन ब्रेन 100% समझना और सुनने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है। ठीक है, he has merely discovered that he has an imaginations and has commenced to use it in a very elementary way. Two forms of imagination: the imaginative faculty
functions in two forms. One is known as synthetic imaginations and other as creative imaginations. Synthetic imagination, दो तरह की imagination होती है, एक synthetic होती है, one is synthetic and another one is creative imagination. दोनों में फ़र्क क्या है अभी वो पढ़ेंगे. synthetic imagination के बारे में पढ़ते हैं पहले. Through this faculty one may arrange old concept, ideas or plans into the new combinations. This faculty creates nothing. Synthetic imagination कुछ नया नहीं बनाती. It merely works with the material of experience, education and observations with which it is fed. It is a faculty used most by the inventor, with the exception of the who draws upon the creative imaginations. When he cannot solve his problem through synthetic imaginations, creative imaginations. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है. It is the faculty used most by the inventor, with the exception of who draws upon the creative imagination when he cannot solve his problem through synthetic imagination. तो क्या करते हैं, जब इस synthetic imagination से उनका कुछ भला नहीं हो पाता तो वो स्विच करते हैं creative imagination पे. और अब हम बात करेंगे what is creative imagination. Creative imagination, through the faculty of creative imaginations, the finite mind of a man has direct communication with infinite intelligence. It is the faculty through which hunches and inspirations are received. It is by this faculty that all basics or new ideas are handed over to men. It is through this faculty, that thought vibrations from the minds of others are received. It is through this faculty that one individual may tune in or communicate with the subconscious mind of the other man. The creative imaginations work automatically in manner described in subsequent pages. This faculty functions only when the conscious mind is vibrating at an exceedingly rapid rate. As for example, when the conscious mind is stimulated through the emotion of a strong desire, the creative faculty becomes more alert, more receptive to vibrations from the sources mentioned. In proportion to its development through USE, the statement is significant. Ponder over it before passing on. Keep in mind, as you follow these principles, that the entire story of how one may convert desire into money cannot be told in one statement. The story will be complete only when one has mastered assimilated and begin to make use of all the principles. तो 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं. Keep in mind, as you follow these principles, that the entire story of how one may convert desire into money cannot told in one statement. The story will be complete only when one has mastered, assimilated, and begun to make use of all the principles. The great leaders of business, industry, finance, and great artists, musicians, poets, and writers become great because they develop the faculty of creative imagination. तो ये लोग कैसे ग्रो किए, क्योंकि इनके पास क्रिएटिव इमेजिनेशन थी. क्रिएटिव इमेजिनेशन जिसमें आप कुछ नया खुद से बनाने की कोशिश करते हो. बोथ द सिंथेटिक एंड क्रिएटिव फैकल्टीज ऑफ इमेजिनेशन बिकम मोर अलर्ट विद यूज़. जब लोग सिंथेटिक और क्रिएटिव को यूज़ करने लगे तो ज़्यादा एक्टिव होने लग गए. जस्ट एज मसल और ऑर्गन ऑफ द बॉडी डेवलप्स थ्रू यूज़. तो जैसे आपकी मसल होती है, ऑर्गन होता है, वैसे ही आपका ये है क्रिएटिव फैकल्टी और सिंथेटिक फैकल्टी. डिज़ायर इज़ द ओनली अ थॉट. डिज़ायर क्या, सॉरी नींद आ रही है. डिज़ायर इज़ ओनली अ थॉट एंड इम्पल्स. डिज़ायर बस एक इम्पल्स होता है, एक थॉट होता है. इट इज़ अ नेबुलस एंड एम्फेमरल. इनका मीनिंग देखना पड़ेगा मुझे. नेबुलस एंड एम्फेमरल. वेट अ सेकंड, लेट मी चेक. Hey Siri, what is the meaning of ephemeral? EPHEMERAL meaning. रॉक कुछ लिखा आ रहा है, अभी देखते हैं क्या है इसका मतलब. ब्रीफ, शॉर्ट इन टाइम. ठीक है,
शॉर्ट इन टाइम, टेम्परेरी, टेम्परेरी बोल सकते हो. इट इज़ nebulous. Hey Siri, nebulous means. ठीक है. nebulous मतलब हेजी होता है, हेजी. nebulous मतलब हेजी. फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव. एम्फरम मतलब फ्यूगिटिव होता है, स्लो कह सकते हो. इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफ नो वैल्यू until it has been transformed into its physical counterpart. While synthetic imagination is one which will be used most frequently in the process of transforming the impulse of desire into money, you must keep in mind the fact that you may face circumstances and situations which demand use of creative imagination as well. Your imagination faculty may have become weak through inaction. It can be revived and made alert through UAC. This faculty does not die, though it may be become quiescent through lack of use. Center of your attention for the time being on the development of the synthetic imaginations, because this is the faculty which you will use more often in the process of converting desire into money. So guys, कैसे हो सभी के सभी? 7 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या बात है. आज नींद के झोंके ज़्यादा आ रहे हैं. हाय शिवांदी, कैसे हो? शिवांदी भी सुन रही है आज हमारे साथ. आपकी सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीट हो गई शिवांदी दी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ intangible impulse of desire into the tangible reality of money call for the use of a plan or plans. The plans must be formed with the aid of imagination and mainly with the synthetic faculty. अब देखो क्या बोला है कि आपको प्लान्स बनाने होंगे अपने दिमाग में. जो मेन प्लान्स हैं उसे दिमाग में बनाना होगा. रीड द एंटायर बुक thorough. Then come back to this chapter and begin at once to put your imagination to work on the building of a plan or plan from the transformation of your desire into money. Detailed instruction for the building of plan have been given in most every chapter. Carry out the instructions best suited to your needs. Reduce your plans to writing if you have not already done so. The moment you complete this, you have definitely given concrete form of intangible desire. Read the preceding sentence once more. Read it aloud very slowly, and as you do, remember that the moment you reduce the statement of your desire and a plan of its realization to writing, you have actually taken the first step of the series of steps which will enable you to convert the thought into your physical counterpart. मतलब आपको बस शुरुआत करनी है, बाकी धीरे धीरे उस चीज़ को मानना है, वो चीज़ें पूरी हो जाएगी. अमेजिंग बुक रीड कर रही हूँ, थैंक्स फॉर द सजेशन बुक. वेलकम. तो गाइस, आज की लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी छोटी होगी, हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, आंखें बंद हो रही है. तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे. कल मिलेंगे फुल जोश के साथ, जल्दी आएंगे. आज थोड़ा सा डिले हो गया था, इस वजह से नींद आ रही है. तो मिलते हैं कल. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. कल करेंगे हम लोग 5th चैप्टर